Hello children, today we are going to study a very interesting and motivational story written by Oscar Wilde. It's very famous. This is taken from class 9th Moment book. Well, what is the theme of the story? Before that I must tell you, if you want to get the complete solution, it means if you watch the video till the end, you will be able to write all the answers related to the chapter. Well, the theme of the story, it highlights the unequal distribution of the wealth and happiness among the people, or you can say social injustice prevalent there in the society. This is the theme of the Happy Prince. Some people are very happy, some people have a lot of wealth, whereas some people are very sad and they do not have ample amount of wealth or money. Yes, before starting the story, like Happy Prince is the main character and Swallow. These two are the main characters, Happy Prince and Swallow. Now, before starting the story, as always, I start with vocabulary because I feel that vocabulary is very important and it only helps children improve language. Yes, so first word is column. Column means pillar. Gilded means thinly covered. Alighted means flew down to. Cathedral means main church. Tossing feverishly means unsteadily with favor. You can speak the vocabulary with me, you can remember this way. Thimble means cap worn on the finger for protection. And delicious slumber, peaceful sleep. Commissions, work. Garret refers to small room on roof. Flutter means flaps wings quickly. Listlessly means as if without life, right? Leaden heart means heart made of lead. Snapped means broken. Shabby, worn out, and dirty. Proclamation, that is government order. So let's begin the story. The story begins with the line, high above the city, on a tall column, on a tall pillar, there was the statue of Happy Prince. And once upon a time, Swallow was passing by the same city. Actually, Swallow was going to Egypt. Swallow was going to Egypt because it was getting colder and comparatively Egypt is a warmer that time, right? So Swallow was migrating to Egypt. His friends had already migrated there last week, so he was already late, so he was also flying, and this night he reached this city of Happy Prince. So when he reached there, he saw the statue, so he found to rest there only. So at the bottom, pedestal, at the pedestal, he thought of resting. But after some time, रेस्ट करने ही लगा बेचारा कि अचानक से एक पानी की बूंद गिरी. A drop of water fell on him. उसको लगा यार, what place is this? बादल तो दिख ही नहीं रहा, there is no cloud, but still it is raining. Then too, he was just trying to put his head into his wings. Again, a water drop fell on him. लगा यार, बादल तो है ही नहीं, कैसे ये पानी कहाँ से आ रहा है, right? So when he thought of flying, he began to open his wings. Wings को open करने ही वाला था कि एक और drop गिरी, and this time he saw that water drops were falling. It was not a raindrop, it was falling from his eyes. So he was very surprised. He flew up and then asked, "Who are you?" He replied, "I am Happy Prince." अरे यार, आप हैप्पी प्रिंस हो तो why are you sad? Why are you crying? रो क्यों रहे हो? He said, now this is the question, it is often asked, like why was he called Happy Prince? So this you can write in the answer. Actually, I belong to the city. When I was alive in my palace, unhappiness and sorrow were not permitted. And I enjoyed my life happily. Entire my life, I did not come across any misery and problem. Right? So I was called
the happy prince. But now, after my death, people put me on the tall column, right? Tall column in the heart of the city from where I am able to see the entire city. अब क्या है, पूरे सिटी के दुख दर्द माइजरी को ये देख सकते हैं, कौन कितना परेशान है, किसको क्या दिक्कत हो रही है. He was able to see. So he said, seeing the problem, अब जब इनके problems को मैं देख रहा हूँ, then my heart is filled with sorrow. I'm unable to control it. तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि he is so sad to see the people of the city sad. So the prince requested, can you do me a favor? यार एक फेवर करोगे क्या? तो बोले ओके, can you stay tonight? Can you stay? Can you give me one night? Can you stay with me? So he said, actually I am getting late, right? I have to go to Egypt. My friends have already gone. He said, actually far away in a small house, through the window I can see there is a seamstress. Seamstress means lady tailor, है ना? Seamstress means lady tailor. She is doing some work of embroidery, और जिसके कारण वो thimble भी लगाई है, right? Thimble भी लगाई है, but then also her fingers are pricked. And her condition is not good. Her son is lying next to her room ill, right? He is demanding for oranges, but she is unable to give. She is only able to provide river water, right? So please help कर दोगी क्या? If you provide him ruby, which is there on the sword, right? So her problem, if you provide her this, her problem would be solved. तो उसको लगा यार ठीक है, अच्छा काम है. But he did not want to, he was not interested in the seamstress. He simply wanted to reduce the pain of happy prince. तो बोला चलो ठीक है, I will do this. तो swallow flew over the cathedral, right? So swallow flew over the cathedral and then reached the seamstress. Seamstress was also sleeping out of tiredness. इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि उसे भी नींद आ गई. And then near the thimble के पास ही he put the ruby. थिम्बल के पास रूबी रखकर वहाँ से चलने लगी कि तभी वो बच्ची के पास गई. And then she fluttered her wings. And this way the child got some air. थोड़ी उसको हवा मिली, उसको अच्छा लगा. And he felt as if he was getting well, right? And after that Swallow came back. When he came back, Swallow asked him, it's so cold here, but why I'm feeling warmth? I'm not feeling so cold. तो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि ये अच्छा काम करने का परिणाम है. This is the result of good work. Just now you have helped seamstress, and that's why out of happiness you're not feeling so cold. Then too, there is too cold here. Okay, so next day he was in a plan, he was in a mood to go. Next day when he woke up, he flew to the river, right? And in the evening again he came back to the happy prince, and he was to say goodbye. But again happy prince said, swallow, little swallow, will you stay for one more day? एक दिन और आप रुकोगे क्या? Please, can you do me a favor? There is a playwright. एक playwright है ना? He is very poor. इतना poor है कि it's very cold, है ना? काफ़ी ठंड है, लेकिन उनके पास फायर प्लेस के लिए, आग जलाने के लिए पैसे, लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं. He is very hungry, and out of hunger he is unable to complete his drama, his play. He is unable to complete his play. वो अपना play complete नहीं कर पा रहा, which he has to give to the director of the theater, जो theater director को उनको देना है. So please provide. अब मेरे पास अगर एक और रूबी रहा होता, then I could have given you, but I do not have. Then he said, okay, you can pluck one of my sapphires.
तो स्वैलो बोला भैया एक दिन और रुक तो जाएंगे लेकिन आँख से सफ़ायर नहीं लेंगे, आई विल नॉट प्लक सफ़ायर फ्रॉम द आई, है ना, ये काम मेरे से नहीं होगा। ही सेड डू एज आई कमांड यू। अब प्रिंस, ये प्रिंस है तो उन्होंने कमांड दिया, मीन ऑर्डर दिया कि डू एज आई कमांड यू। तो बेचारा सफ़ायर प्लग किया जो कि ब्लू कलर का होता है, राइट। सफ़ायर प्लग किया, बोथ आर वेरी वैल्यूबल्स। Sapphires were there in the eyes and ruby was there on the sword and the entire body was covered with golden leaves, right। तो sapphire दिया, right, और playwright के पास गया। playwright was also in half sleep। when he went there he put it aside। उनकी नींद खुल गई, फ्लटर से उनकी नींद खुल गई। उसके बाद वो सफ़ायर देखता है, एक वैल्यूबल जेम्स वो देखता है, वैल्यूबल स्टोन, तो ही बिकेम वेरी डिलाइटेड। उनको लगता है कि there is someone, right, there is someone who is praising my effort। कोई तो है जो मेरे काम को, मेरे प्रयास को, मेरे एफर्ट को प्रेज कर रहा है, and that's why I have got it। he became very happy। now next day again he moved in the day and then in the evening he came back to happy prince and asked अब तो मैं जाऊँगा Egypt, I'm planning to go there। तो अगेन हैप्पी प्रिंस सेड, swallow swallow little swallow, would you stay with me one more day, right, एक दिन और रहोगे क्या। then he was not in a mood but he could not refuse and हैप्पी प्रिंस सेड कि देयर इज़ अ मैच गर्ल, और मैच गर्ल उसके सारे जो मैचेस हैं फेल इनटू द गटर एंड ड्यू टू दैट शी इज़ वेरी अफ्रेड। और उसके पैर में स्लीपर्स भी नहीं है, शूज़ भी नहीं है, राइट। और अगर ऐसे वो घर वापस जाएगी, इफ़ शी गेट्स बैक होम विदाउट मनी, बिना पैसे घर जाएगी तो उसके पापा उसको डांटेंगे, हो सकता है उसकी पिटाई भी करें। शी मे बी पनिश्ड देयर, सो प्लीज़ गो, प्लीज़ प्लक वन ऑफ द सफायर्स फ्रॉम द अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड सॉल्व हर प्रॉब्लम। अब स्वैलो बोला भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे से, अगर मैं दूसरा भी प्लग कर लिया तो देखोगे कैसे, तुम तो अंधे हो जाओगे, यू विल बी कंप्लीट ब्लाइंड, आई कैन नॉट डू दिस। तो बोला डू एज आई कमांड यू, फिर वही जैसा मैं बोलता हूँ करो। बेचारा प्लग किया, मैच गर्ल के पास गया, मैच गर्ल को जब मिला तो शी बिकेम वेरी हैप्पी, राइट, एंड शी हैप्पीली वेंट होम। अब क्या हुआ कि इनकी दोनों आंखें चली गई, रूबी भी गायब, right, I mean was given away। now swallow said I will not go to Egypt, I will stay with you because you do not have eyes, I will tell you the situation of your city। तो दिन में इसके कंधे पे बैठ कर, शोल्डर पे बैठ कर वो बताता रहता कि लाइक इट्स वेरी गुड, ऑल द पॉजिटिव थिंग्स ही यूज्ड टू से इन द बिगिनिंग। तो he said that like misery is more important than these things, right। क्योंकि अब उसको अब रियलाइज हो रहा है, जब वो अलाइव था तो दुख को कभी देखा ही नहीं, कभी किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाया। नाउ व्हेन ही वाज एज अ स्टैचू देन ही रियलाइज दैट हेल्पिंग पीपल इन नीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही आस्क्ड दैट टेल मी अबाउट द प्रॉब्लम्स प्रिवेलेंट इन द सिटी। तो मेरे सिटी में घूमो और घूम कर पता करो कि क्या प्रॉब्लम है। तो स्वैलो फ्लू around the city, right, and he found that all the rich people were very happy in their palaces, in their big houses। they were making merriment, they were enjoying, वो enjoy कर रहे थे। whereas poor people, beggars, they were begging in the street। yes, वो लोग भीख मांग रहे थे। so there was a huge gap and differences in the life of both the people। and he also found there were some children जो बेचारे सोने की कोशिश कर रहे हैं और वॉचमैन ये बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट द प्लेस, यू कैन नॉट स्टे हियर, आप यहाँ स्टे नहीं कर सकते। अब ये आकर स्वैलो फिर बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अमीर लोग तो बहुत खुश हैं लेकिन गरीब लोग, भिखारी लोग के पास बड़ी दिक्कत है, उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है, सोने के लिए भी कुछ ढकने के लिए नहीं है, कुछ बच्चे हैं, दे वर वेरी अपसेट एंड दे वर इन प्रॉब्लम, राइट। तो ये बोला अब क्या किया जाए। ही सिम्पली सेड दैट माई बॉडी इज कवर्ड विद गोल्डन लीव्स,
तो what you do, you pluck the leaves and then give it to the children. This will help them solve their problem. तो बारी बारी से उनके वो गोल्डन लीव्स को प्लक करने लगा, और जितने भी पुअर चिल्ड्रन थे, स्लोली स्लोली ऑल द गोल्डन लीव्स वर प्लक्ड. अब सिचुएशन ये है कि ना ही सफायर है, ना ही रूबी है, और ना ही गोल्डन लीव्स हैं. एंड कोल्ड इज ऑल्सो इंटेंसिफाइंग ग्रेजुअली. अब ठंड भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, राइट. एंड स्वैलो इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, मतलब वो अब डेथ के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि इतनी ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. दैट्स वाई ही वॉज प्लानिंग टू गो टू इजिप्ट. लेकिन वो रुक गया केवल इसके ग्रैटिट्यूड के लिए, केवल इसके काइंड हार्टेड से इम्प्रेस होकर वो रुक गया. ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हिज काइंड हार्टेडनेस दैट ही स्टेड देयर. एंड टुडे ही केम एंड सेड दैट कि आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय. आज मैं सच में गुड बाय कहने के लिए आया हूँ. तो हैप्पी प्रिंस बोला कि अब हाँ नहीं यार, अब जाओ, बहुत हो गया, यू स्टेड देयर विद मी लॉन्ग, अब जाओ इजिप्ट जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ, यू ऑल्सो हैव योर लाइफ. ही सेड नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. बट एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, मे आई किस यू, मे आई किस यू. तो हैप्पी प्रिंस ने बोला यस यस, यू कैन किस मी ऑन माई लीप बिकॉज आई लव यू, क्योंकि इसने इसे बहुत हेल्प करी, राइट. सो द मोमेंट स्वैलो किस्ड हिम, ही फेल डाउन आफ्टरवर्ड्स एंड डाइड. लास्ट टाइम ही हैड alighted, flew down to rest here, but this time he fell down and he died. अब the moment he died, there was some sound as if the heart of the happy prince was broken. His heart snapped, and that cracking sound could be heard. Well, after some time, दिन में वहाँ से मेयर गुजरते हैं, राइट. मेयर, तो मेयर बोलते हैं, मेयर saw the situation in the heart of the city on a tall column, राइट. देयर वाज अ स्टैचू, और स्टैचू अब कैसा दिख रहा है, अगली. ना ही उसमें गोल्डन लीव्स है, ना ही रूबी है, ना ही सफाइर्स है, ये बहुत भद्दा सा लग रहा. तो बोला ये दिस इज़ नॉट द प्लेस टू हैव सच स्टैचू हियर. प्लस उसके बॉटम में पेडेस्टल पे एक बर्ड भी मरा पड़ा है. तो एक नियम भी बनाते हैं वहाँ, जो ऑफिसर क्लर्क है उनको बोलते भी हैं कि देयर शुड बी प्रोक्लेमेशन, मीन्स गवर्नमेंट ऑर्डर, देयर शुड बी प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हियर, राइट. अब वहाँ से उसको हटवाने की बात होती है, तो इसको पिघलाया जाता है फाउंड्री में, पूरा तो मेल्ट हो जाता, बट हार्ट जो उसका लेडन का होता है ना, लेडन हार्ट मेड ऑफ लेड, दैट वॉज नॉट मेल्टेड. और उसको भी गार्बेज पर फेंक देते हैं, जहाँ डेड बर्ड्स को फेंका जाता है ना, डस्ट ऑफ हीप फेंक दिया जाता है उसको, कूड़े के ढेर पर, राइट. अब गॉड ऑर्डर्स द एंजल्स टू ब्रिंग टू मोस्ट प्रेशियस थिंग देयर फ्रॉम द अर्थ. दो मोस्ट प्रेशियस थिंग्स को लेकर आओ. तो एंजल्स नीचे जाते हैं और दे पिक्ड हैप्पी प्रिंस हार्ट एंड डेड बॉडी ऑफ स्वैलो. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई वर दे कॉल द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, क्यों उनको मोस्ट प्रेशियस कहा जाता है. वाई, बिकॉज दे डिड नॉट केयर फॉर देमसेल्व्स, दे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स. For the creation of God, God की जो creation है, mankind and everything, they were helping them, and this is the best part of the life one can do. And that's why according to God, according to the writer also, the heart of the prince and the dead body of the birds were the most precious thing there on the earth. तो उन्होंने कहा, God said that the swallow will be there in the garden of paradise, and the prince will stay there with me in the city of gold and praise. This is the end of the story, and the moral of the story is that we should help the people. We should help the people in the need of our, and those who do not have money or they are in problem due to some reasons, we should always be ready
We should always be ready to help. I hope all the things might be clear to you and you must be able to write the answers as well.